आपका नाम क्या है और कब आए आप कैलगरी में? सो हाय, माय नेम इज़ व्रज एंड मेरे को कैलगरी में 8 मंथ्स हो गया है। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं इंडिया में ही था हूँ, डायरेक्टली कैलगरी में ही आया हूँ। डायरेक्टली कैलगरी में। आप किस पर्पज़ से आए हैं कैलगरी में? मैं बेसिकली स्टडी के पर्पज़ से आया हूँ कैलगरी में। ओके। और लाइक अपने को कुछ एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए, और करियर में एडवांस जाने के लिए। सो बेसिकली क्योंकि ये बहुत उन्होंने चेंजेस कर दिए, सो मेरे को लगता है कि वर्क परमिट में थोड़ा इश्यू आ सकता है, क्योंकि वो प्रोविंस वाइज है और यहाँ पे थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। फिर क्या पता अभी जो चेंजेस है अभी तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, पर क्या पता आगे ना भी हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अभी उनको ज़रूरत है, आगे जाके उनको ज़रूरत नहीं ही हो सकती। जैसे बेसिकली आप देख सकते हो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक बिजनेस रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसके अंदर उनको वर्क परमिट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस है। First thing I say the students who are planning to come Canada, so like, don't do that first, like, because the way you think, the way you anticipate is not the way you have here. The things we have here, because here the living cost is so high. I came to Calgary because many were saying the living cost of Calgary is so low compared to Toronto, British Columbia, Vancouver, and such states, provinces. After landing here, one should have at least $1,000 per month to live, to manage their livelihood. I'm from last 1 year. I still have my friends, classmates, and my associates who didn't have part-time job yet. So and whoever have part-time jobs, they are not getting enough hours. Like for the international students, you only can work 20 hours per week, and the situation right now, you can't get in 20 hours per week to serve and to manage your expenses. So I heard from one of my friends a few days back. He's saying but funny way, but he's saying like whatever you want to eat in Canada, you just eat. Whatever you want to drink, you drink. Wherever you want to visit the places, please visit it, because anyhow Canadian government is not allowing you to stay back here. तो अगर मैं अभी रिसेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसकी बात करूँ भी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट और कनेडियन गवर्नमेंट के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी बहुत अभी कन्फ्यूज़न हो रही है। अभी मुझे सेकेंड ईयर का पहली कन्फ्यूज़न है, अभी सेकेंड ईयर का कोर्स मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में अभी ये सवाल है भी, अगर मैं सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे अभी जो रिसेंटली सुनने को मिला था, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला भी अगर आप 1 नवंबर के बाद अप्लाई करते हो, वैसे मैंने ऐसा कहीं पे रिटर्न में अभी देखा नहीं है, सो कंफर्म नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को, बट उसने बोला भी अगर आप 1 नवंबर के बाद अप्लाई करते हो तो हो सकता है भी आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिले, जबकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2 years यू विल गेट 3 years ऑफ PGWP, मतलब आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट अभी जो सिनेरियो उसमें ये कन्फ्यूज़न है भी, अगर मैं 2 साल भी पढ़ता हूँ तो अगर मुझे 1 ही साल का मिलेगा तो मुझे ज़रूरत क्या है मेरे को दूसरे साल का कोर्स करने की। Starting January 2024, Government of Canada started announcing a slew of changes that would eventually impact the demand for Canada as well as the reputation of Canada as a destination of choice for international students. The first major change that was announced was reducing the number of visas being issued for international students by applying a cap on the overall numbers. For 2024, government announced that they'll be reducing the number of visas by 35% as compared to the numbers in 2023. And then each institution was allocated a certain number, a quota of international students that they could recruit. Eligibility of postgraduate work permits was also withdrawn for a certain group of post-secondary education institutions. Canada has suffered a huge reputational impact due to these unpopular changes. The entire education sector right now in Canada
is in a dire strait. Canada, for the first time in recent history, is facing a shortage of demand globally when it comes to international education. Most of the institutions have reported that they won't be able to utilize their quotas that was given to them by the government, some as less as 40% of the allocated numbers. International students play a very crucial role in the Canadian economy and Canadian society. Almost 450,000 international students entered Canada in 2023, bringing in roughly $30 billion in revenue. The revenue from these international students support thousands of jobs, local jobs, directly and indirectly. These students are also much needed to fulfill the gaps in the Canadian labor market. Almost 40% of out of more than a million international students that were there in Canada by end of 2023 are actually coming from India.